Another component we are talking about the connectivity. Now, how the connection will be established, how the network layer will be connected, how basically what barriers with the help of our clouds, devices, sensors, actuators, how they are basically connected and how they will communicate. So this is largely referred to as a network layer, right? Network layer, as हमने कल डिस्कस किया था कि हमने एक लॉगिन पेज का एग्जांपल लिया था. लॉगिन पेज के एग्जांपल में भी है डिस्कस की एक यूजर इंटरफेस होता है, एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जिसमें से यूजर को दिखता है कि कैसे कहाँ पर क्या डेटा करना है, वो यूजर इंटरफेस से इजी टू यूज कर पाता है. जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड का एग्जांपल लिया था. देन जैसे ही वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, इवेंट ट्रिगर होता है, जब वो बटन पे क्लिक करता है, तो एप्लीकेशन लेयर होती है, और एप्लीकेशन लेयर देन नेटवर्क लेयर होती है आपकी, जो सर्वर से डेटाबेस में जो डेटा है उससे डेटा उठाकर आपने जो डेटा एंटर किया उसको मैच एंड आउट करता है. So somewhere the network layer is very responsible. So in a connectivity component, we are talking about a completely network layer and talks about how the data is transferred. अब जो आपने डेटा डाला है प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड में, वो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा and how will get a data from a database and process to ensure seamless communication between connecting devices. अब यहाँ पर अगर हम connected devices की बात करें, so whatever the devices we are using in our Internet of Things, or the sensors, or the cloud, whether we are using the cloud data or the cloud technology and the actuator, यहाँ पर connection कैसे establish होगा और simple data connectivity कैसे होगी. For this to work efficiently, these elements need to interconnected in order to understand the data and respond with the appropriate action. कब आपका डेटा डेटाबेस में से एक एक करके फैच होगा, कब आपका डेटा जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड में डाला है वो डेटाबेस में जाकर मैच होना स्टार्ट होगा. तो आफ्टर द एप्रोप्रिएट एक्शन दैट यू विल परफॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन साइन बटन, उसका रिस्पॉन्ड होगा. This is where IoT protocols. Now here we need a IoT protocols and the IoT gateways come. So another component we are talking about here, the protocols and the gateway. IoT protocols provide a medium of a transport for data collected from the sensors. अब data sensors ने जो इतना सारा data collect किया है, उसको कैसे transport करेगा, वो IoT protocols प्रोवाइड करेगा. एंड डेटा देन गोज टू एन IoT गेटवे. अब जो बीच में ब्रिज मिलेगा, रास्ता मिलेगा, किस से गेटवे दैट कलेक्ट्स एंड ट्रांसलेट द डेटा बीइंग रिसीव्ड with respect to the protocols, right? So some rules and regulations should be followed, some steps should be followed for transferring data which the sensors has been collected and then using that data, right? So somewhere everywhere we are talking about here basically the connectivity. Another major component of the IoT ecosystem is the connectivity.